हैं तो फिर I get. So guys, 10th CBSE results are out and I've been just waiting. It's currently 1:30. बहुत देर से आ चुका है result तो, but I was just waiting to like record it so that I can show it to you guys, and of course it will be like memory for me also. Let's talk about the expected results. I expect almost like 100 in social science. बहुत अच्छे से दिया था. And then in English I think 97 और 98. मैथ्स में मुझे याद नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो एग्ज़ाम को दिए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो. मैथ्स में आई गेस 95 आई थिंक, नॉट श्योर. के बाद हिंदी में अगेन 95 और 93 समथिंग. कंप्यूटर में तो डोंट इवन आस्क, आई डोंट रिमेंबर अ थिंग एट ऑल. साइंस में लाइक बहुत अच्छे से नहीं हुआ था बट स्टिल 95 समथिंग. Okay, now let's just open the results and see कि मुझे एक्चुअल में कितने मार्क्स आए हैं. कहाँ है सच में मेरा एडमिट कार्ड? मैं देख चुका हूँ. दे. पहले तेरे को सुनना पड़ेगा. नहीं. अरे यार. सुनाओ. तू दे ना. मम्मा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा. Guess what? I have seen my results and I'm of course happy with it क्योंकि why not? First of all, the last few hours were a roller coaster of emotions. I was happy, I was stressful, I was sad at some point, and now I'm all satisfied and happy. So as I was saying, that last few hours were quite chaotic and stressful at the same time. Yes, and first of all, I forgot my admit card somewhere, but thankfully my mom had kept it like safely somewhere. But don't think that I was careless or something because पूरे time it was like very secured और मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखी थी. But then स्कूल में कुछ काम था like डिजिलॉकर वगैरह का पिन लेने जाना था, and that time मैं उसको टेबल में भूल गई थी. Then my mom safely kept it, my mother. Let me share my results. Starting with English, I got a 95 in English, which is very nice. Well, I expected 97, but उसके आसपास ही है 95. So yeah, it's of course good. Then Hindi, I said I was going to get 95 or a 93, and guess what? I got 93. And mathematics, okay. I still expected like above 90, but I got below 90. I'm not sure कैसे, but it's okay. Science में I got 94, जबकि ये this was like my worst exam ever. मैं बहुत सारे mistakes करके आई. जितना मैं mistakes करके आई थी उसके हिसाब से I guess. Okay, so in social science, in which I was very confident, I thought I would even get 100. I got 98, which is also. And in information technology, I scored 98 again, which is also acceptable. Now let's calculate my percent. English I got 95 plus Hindi I got 93 plus maths 87 plus what else 98 in social studies, then 94 in science. After this I have 467 divided by 5. 93.4. या सो आई गॉट 93.4. और ये मेन सब्जेक्ट्स को जोड़ के हैं लाइक मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश एंड हिंदी. और मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि बेस्ट ऑफ 5 भी निकालते हैं, तो बेस्ट ऑफ 5 में तो मैं मैथ्स हटाऊंगी. देन उसको करने से मेरा 95 समथिंग आ रहा था. लेट मी शो इट टू यू गाइस रियल क्विक. 98 प्लस 98 प्लस 94. मैं मैथ्स को अगर आईटी से रिप्लेस कर दूं तो फिर आई गेट 95.6. तो फिर मतलब आई एम नॉट श्योर कि हमारे स्कूल में कैसे रिजल्ट देंगे. तो अगर बेस्ट 5 देते हैं तो मेरा 95 आएगा, और अगर बेस्ट 5 नहीं लेते हैं तो फिर आई गेट अ 93, विच इज़ ऑल्सो गुड. एंड तो अभी तो मैं आई विल कंसिडर कि मेरा 93% ही आया है राइट नाउ. So yeah, it's 93% guys.
Thank you for watching and bye bye. Well, one thing I forgot to congratulate you guys. So yeah, congratulations guys, जिसके भी result आ गए हैं. For study vlogs, tips and motivation, subscribe to my channel.